जो सिर्फ एक ही तरीके से फिट होता है। अगर आप गलती से कोई पिन मोड़ देते हैं तो सोचिए आपकी मेहनत का क्या होगा। इसलिए धैर्य से करें, यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब सीपीयू सही जगह पर हो तो आरएएम जोड़ने का समय है। पॉइंट 4, रैम और कूलिंग जोड़ना। रैम और सीपीयू कूलर की स्थापना। अब रैम जोड़ने का समय है। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। बस इसे जगह पर डालें और क्लिक की आवाज सुनें और कूलर लगाना ना भूलें। आप नहीं चाहते कि आपका प्रोसेसर गर्मियों के दिन की तरह गर्म हो जाए। इसे अच्छे से सुरक्षित करें और एयर फ्लो की जांच करें। याद रखें, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सीपीयू जल जाए। अब जब हम ठंडा हो गए हैं तो चलिए इसे चालू करते हैं। एक्ट 3, फाइनल टचेज और पावरिंग अप। पॉइंट 5, जीपीयू स्थापित करना, ग्राफिक्स कार्ड की स्थापना। अब जीपीयू लगाने का समय है। यहां जादू होता है। इसे पीसीआई स्लॉट में डालें और सुरक्षित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह सही जगह पर है, जैसे क्लब के बाहर एक बाउंसर जो सब कुछ जांचता है। अगर जीपीयू ढीला है तो परफॉर्मेंस में समस्या आ सकती है। और हम यहां स्मूथ गेमिंग के लिए हैं, ना कि तकनीकी बुराइयों के लिए। अब हम लगभग तैयार हैं। चलिए अंतिम सत्यापन करते हैं। पॉइंट 6, पावर ऑन करना और परीक्षण करना। केबल्स कनेक्ट करना और पावर ऑन करना। अंत में पावर सप्लाई और सभी आवश्यक केबल्स कनेक्ट करें। यह रहा हमारे इंतजार का फल। क्या यह चालू होगा? क्या BIOS दिखेगा या फिर कोई तकनीकी झटका? यह सच में मजेदार है। अगर सब कुछ सही हुआ तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान है। याद रखें, हर विशेषज्ञ कभी न कभी एक शुरुआत करने वाला होता है। तो आपने सफलतापूर्वक अपना पहला पीसी बनाया, लेकिन ठहरिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। अगले वीडियो में हम आपके सिस्टम को अधिकतम प्रदर्शन के लिए ऑप्टिमाइज करने और बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी तकनीकी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगले बार तक हैप्पी बिल्डिंग। यह सुनिश्चित करें कि यह सही जगह पर है, जैसे क्लब के बाहर एक बाउंसर जो सब कुछ जांचता है। अगर जीपीयू Alona ढीला Computer है Repairing तो Shop. परफॉर्मेंस If you में want any समस्या आ type of सकती है। computer parts, और please हम leave यहाँ your स्मूथ full गेमिंग के details लिए with हैं, products. ना I कि will तकनीकी contact you बुराइयों के later. लिए। From अब हम Alona लगभग Computer तैयार हैं। Repairing Shop. चलिए Welcome अंतिम to Alona सत्यापन करते Computer हैं। Repairing Shop. पॉइंट If you 6, want any type of पावर ऑन computer करना parts, और please परीक्षण leave your करना, full details with केबल्स products. कनेक्ट I करना will और contact पावर you ऑन later. करना। From अंत में Alona Computer पावर Repairing सप्लाई Shop. और सभी Welcome आवश्यक to केबल्स Alona कनेक्ट करें। Computer Repairing ये रहा Shop. If you want हमारे any इंतजार type का of फल। computer parts, क्या यह please leave चालू your होगा? full details क्या with products. BIOS I दिखेगा will contact you या फिर कोई later. तकनीकी झटका? From Alona यह सच Computer में Repair. मजेदार है। अगर सब कुछ Computer सही हुआ Repairing तो Shop. आपकी If you मेहनत want रंग any लाएगी, type of computer लेकिन parts, अगर नहीं please leave तो your चिंता full मत details कीजिए, with products. हर I समस्या will का contact समाधान you है। later. याद रखें, From Alona हर Computer विशेषज्ञ Repairing Shop. कभी न कभी एक Welcome to शुरुआत Alona करने वाला होता Computer है। Repairing Shop. तो If you want any आपने type of computer सफलतापूर्वक parts, अपना please पहला leave पीसी your full बनाया, details with लेकिन products. ठहरिए, I will contact इसमें you और भी later. बहुत कुछ है। From Alona अगले वीडियो Computer में Repairing हम Shop. आपके सिस्टम को Welcome to Alona अधिकतम Computer प्रदर्शन के Repairing लिए Shop. If you ऑप्टिमाइज want any करने type of और computer बेहतरीन parts, please सॉफ्टवेयर के leave your बारे में full जानेंगे। details with products. I will सब्सक्राइब करना contact न you भूलें। later. आपकी From Alona तकनीकी Computer यात्रा Repairing अभी Shop. शुरू हुई है। Welcome to क्या Alona आपने कभी Computer सोचा Repairing है Shop. If कि you आपका want any कंप्यूटर type of एक computer टाइम बम parts, की please तरह है? leave your full एक details पल with में सब products. कुछ ठीक I will चलता है contact you later. और अगले ही पल वो From इतना Alona धीमा हो Computer जाता है Repairing Shop. कि आपको Welcome लगता to है कि वो Alona चिड़िया Computer की तरह Repairing उड़ रहा Shop. है। If you want any लेकिन type of क्या computer होगा parts, please leave अगर your मैं full कहूं कि details अपना with खुद का products. पीसी I will बनाना contact you आपके later. लिए एक नई दुनिया From खोल Alona सकता है? Computer Repairing आज हम Shop. जानेंगे कि Welcome पहली to बार Alona नया पीसी Computer कैसे बनाएं। Repairing Shop. तैयार If you हैं? want any type चलिए of computer लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हर पार्ट की कंपैटिबिलिटी चेक करें। कोई भी नहीं चाहता कि बिल्ड के अंतिम पल में अचानक से किसी स्टोर की दौड़ लगानी पड़े। अब चलिए मजेदार हिस्से में चलते हैं। एक्ट 2 बिल्ड प्रोसेस। पॉइंट 3 सीपीयू स्थापित करना।
सीपीयू की नज़दीकी दिखाना। अब हम सीपीयू लगाने की बारी पर हैं। इसे सॉकेट में धीरे से डालें और सुनिश्चित करें कि नॉट्स सही से अलाइन हो जाएं। यह ऐसा है जैसे जिगसॉ पहेली का एक टुकड़ा जो सिर्फ एक ही तरीके से फिट होता है। अगर आप गलती से कोई पिन मोड़ देते हैं तो सोचिए आपकी मेहनत का क्या होगा। इसलिए धैर्य से करें। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब सीपीयू सही जगह पर हो तो आरएम जोड़ने का समय है। पॉइंट 4, रैम और कूलिंग जोड़ना। रैम और सीपीयू कूलर की स्थापना। अब रैम जोड़ने का समय है। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। बस इसे जगह पर डालें और क्लिक की आवाज सुनें और कूलर लगाना ना भूलें। आप नहीं चाहते कि आपका प्रोसेसर गर्मियों के दिन की तरह गर्म हो जाए। इसे अच्छे से सुरक्षित करें और एयर फ्लो की जांच करें। याद रखें, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सीपीयू जल जाए। अब जब हम ठंडा हो गए हैं तो चलिए इसे चालू करते हैं। एक्ट 3, फाइनल टचेज और पावरिंग अप। पॉइंट 5, जीपीयू स्थापित करना, ग्राफिक्स कार्ड की स्थापना। अब जीपीयू लगाने का समय है। यहां जादू होता है। इसे पीसीआई स्लॉट में डालें और सुरक्षित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह सही जगह पर है, जैसे क्लब के बाहर एक बाउंसर जो सब कुछ जांचता है। अगर जीपीयू ढीला है तो परफॉर्मेंस में समस्या आ सकती है और हम यहां स्मूथ गेमिंग के लिए हैं, ना कि तकनीकी बुराइयों के लिए। अब हम लगभग तैयार हैं। चलिए अंतिम सत्यापन करते हैं। पॉइंट 6, पावर ऑन करना और परीक्षण करना। केबल्स कनेक्ट करना और पावर ऑन करना। अंत में पावर सप्लाई और सभी आवश्यक केबल्स कनेक्ट करें। यह रहा हमारे इंतजार का फल। क्या यह चालू होगा? क्या BIOS दिखेगा या फिर कोई तकनीकी झटका? यह सच में मजेदार है। अगर सब कुछ सही हुआ तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए। हर समस्या का समाधान है। याद रखें, हर विशेषज्ञ कभी न कभी एक शुरुआत करने वाला होता है। तो आपने सफलतापूर्वक अपना पहला पीसी बनाया, लेकिन ठहरिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। अगले वीडियो में हम आपके सिस्टम को अधिकतम प्रदर्शन के लिए ऑप्टिमाइज करने और बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हर पार्ट की कंपैटिबिलिटी चेक करें। कोई भी नहीं चाहता कि बिल्ड के अंतिम पल में अचानक से किसी स्टोर की दौड़ लगानी पड़े। अब चलिए मजेदार हिस्से में चलते हैं। एक्ट 2, बिल्ड प्रोसेस। पॉइंट 3, सीपीयू स्थापित करना, सीपीयू की नजदीकी दिखाना। अब हम सीपीयू लगाने की बारी पर हैं। इसे सॉकेट में धीरे से डालें और सुनिश्चित करें कि नॉट्स सही से अलाइन हो जाएं। यह ऐसा है जैसे जिगसॉ पहेली का एक टुकड़ा जो सिर्फ एक ही तरीके से फिट होता है। अगर आप गलती से कोई पिन मोड़ देते हैं तो सोचिए आपकी मेहनत का क्या होगा। इसलिए धैर्य से करें। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब सीपीयू सही जगह पर हो तो आरएम जोड़ने का समय है। पॉइंट 4, रैम और कूलिंग जोड़ना। रैम सीपीयू कूलर की स्थापना। रैम जोड़ने का समय है। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। बस इसे जगह पर डालें और क्लिक की आवाज सुनें। कूलर लगाना ना भूलें। आप नहीं चाहते कि आपका प्रोसेसर गर्मियों के दिन की तरह गर्म हो जाए। इसे अच्छे से सुरक्षित करें, एयर फ्लो की जांच करें। याद रखें, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सीपीयू जल जाए। अब जब हम ठंडा हो गए हैं तो चलिए इसे चालू करते हैं। एक्ट 3, फाइनल टचेज और पावरिंग अप। पॉइंट 5, जीपीयू स्थापित करना, ग्राफिक्स कार्ड की स्थापना। अब जीपीयू लगाने का समय है। यहां जादू होता है। इसे पीसीआई स्लॉट में डालें और सुरक्षित करें।
यह सुनिश्चित करें कि यह सही जगह पर है, जैसे क्लब के बाहर एक बाउंसर जो सब कुछ जांचता है। अगर जीपीयू ढीला है तो परफॉर्मेंस में समस्या आ सकती है, और हम यहाँ स्मूथ गेमिंग के लिए हैं, ना कि तकनीकी बुराइयों के लिए। अब हम लगभग तैयार हैं। चलिए अंतिम सत्यापन करते हैं। पॉइंट 6, पावर ऑन करना और परीक्षण करना, केबल्स कनेक्ट करना और पावर ऑन करना। अंत में पावर सप्लाई और सभी आवश्यक केबल्स कनेक्ट करें। यह रहा हमारे इंतजार का फल। क्या यह चालू होगा? क्या BIOS दिखेगा या फिर कोई तकनीकी झटका? यह सच में मजेदार है। अगर सब कुछ सही हुआ तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान है। याद रखें, हर विशेषज्ञ कभी न कभी एक शुरुआत करने वाला होता है। तो आपने सफलतापूर्वक अपना पहला पीसी बनाया, लेकिन ठहरिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। अगले वीडियो में हम आपके सिस्टम को अधिकतम प्रदर्शन के लिए ऑप्टिमाइज करने और बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें, आपकी तकनीकी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगले बार तक हैप्पी बिल्डिंग। Sky's the limit. रे थोड़ी थोड़ी सा पकड़ मखा सारे सोत्या पे ठाडे ते बैर यारी लारे बोत्या ते दिन में संभाले काम फी माले टोटे हम सांझ होते लाग जैसा खारे सोत्या पे एक पैग हाथ में है तुझा पैग हाथ में है लागे निशाने पे सटीक है जवानी पीक पे काला माल सीट पे अरे ले रे हाथ सन आड़े सबके में ठीक है ले रे सन आड़े सबके में ठीक है ले रे नजारे आड़े सबके में ठीक है। स्वादा आड़े ठीक सारा मामला पूछे औकात हम रोड़ा पे दे सामला तड़के तड़क मखा बाबे का भी नाम ले चांद की रछाया के मैं लाल परी थाम ले यार सीजन में चला और सीजन में खारा फेर बंदी सुना पे सटरीक जवानी पीक पे काला माल सीक पे अरे ले रे हाथ सन आड़े सबके में ठीक है ले रे सन आड़े सबके में ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हर पार्ट की कंपैटिबिलिटी चेक करें। कोई भी नहीं चाहता कि बिल्ड के अंतिम पल में अचानक से किसी स्टोर की दौड़ लगानी पड़े। अब चलिए मजेदार हिस्से में चलते हैं। एक एक्ट 2, बिल्ड प्रोसेस। पॉइंट 3, CPU स्थापित करना, CPU की नजदीकी दिखाना। अब हम CPU लगाने की बारी पर हैं। इसे सॉकेट में धीरे से डालें और सुनिश्चित करें कि नॉट्स सही से अलाइन हो जाएं। यह ऐसा है जैसे जिक्सो पहेली का एक टुकड़ा जो सिर्फ एक ही तरीके से फिट होता है। अगर आप गलती से कोई पिन मोड़ देते हैं तो सोचिए आपकी मेहनत का क्या होगा। इसलिए धैर्य से करें, यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब CPU सही जगह पर हो तो RAM जोड़ने का समय है। पॉइंट 4, रैम और कूलिंग जोड़ना, रैम और CPU कूलर की स्थापना। अब रैम जोड़ने का समय है। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है, बस इसे जगह पर डालें और क्लिक की आवाज सुनें, और कूलर लगाना ना भूलें। आप नहीं चाहते कि आपका प्रोसेसर गर्मियों के दिन की तरह गर्म हो जाए। इसे अच्छे से सुरक्षित करें और एयर फ्लो की जांच करें। याद रखें, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी CPU जल जाए। अब जब हम ठंडा हो गए हैं तो चलिए इसे चालू करते हैं। एक्ट 3, फाइनल टचेज
और पावरिंग अप। पॉइंट 5, जीपीयू स्थापित करना, ग्राफिक्स कार्ड की स्थापना। अब जीपीयू लगाने का समय है। यहाँ जादू होता है। इसे पीसीआई स्लॉट में डालें और सुरक्षित करें। यह सुनिश्चित करें कि यह सही जगह पर है, जैसे क्लब के बाहर एक बाउंसर जो सब कुछ जांचता है। अगर जीपीयू ढीला है तो परफॉर्मेंस में समस्या आ सकती है। और हम यहाँ स्मूथ गेमिंग के लिए हैं, ना कि तकनीकी बुराइयों के लिए। अब हम लगभग तैयार हैं। चलिए अंतिम सत्यापन करते हैं। पॉइंट 6, पावर ऑन करना और परीक्षण करना, केबल्स कनेक्ट करना और पावर ऑन करना। अंत में पावर सप्लाई और सभी आवश्यक केबल्स कनेक्ट करें। ये रहा हमारे इंतजार का फल। क्या यह चालू होगा? क्या BIOS दिखेगा या फिर कोई तकनीकी झटका? यह सच में मजेदार है। अगर सब कुछ सही हुआ तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान है। याद रखें, हर विशेषज्ञ कभी न कभी एक शुरुआत करने वाला होता है। तो आपने सफलतापूर्वक अपना पहला पीसी बनाया, लेकिन ठहरिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। अगले वीडियो में हम आपके सिस्टम को अधिकतम प्रदर्शन के लिए ऑप्टिमाइज करने और बेहतरीन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें, आपकी तकनीकी यात्रा अब भी शुरू हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगले बार तक हैप्पी बिल्डिंग। Hey everyone, ever get hit with surprise fees from your API tool after building tons of data? So annoying, right? Well, I've got a solution for you. Echo API for VS Code. It's a lightweight REST API client that's quick and easy. Here's why Echo API rocks. No login, just install and go. Scratchpad for quick notes. Ultra lightweight and fast. Fully compatible with Postman scripts. Getting started is simple. Open the VS Code Extensions Marketplace, search for Echo API, hit install, done. Creating requests is a breeze. Just open the Echo API tab, right-click to make a new collection, and add your request. It handles variables and environments seamlessly, with built-in system variables for random data like UUIDs and emails. For testing, just set your condition and values. No scripting needed. It supports multiple authorization types too, like basic auth, bearer, and OAuth. Echo API is growing fast. Try it out and let me know how it stacks up to other tools. Happy coding! Plus, Echo API has a desktop client, an IntelliJ plugin, and a Chrome extension called Echo API Interceptor. Pick whatever works best for you. एक मिनट जरा इधर आइए। अगर आप ये टर्की के वीडियोस ही देखते रहोगे तो अगोड़ा पर टर्की वेकेशंस वाले डील्स कब देखोगे? ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग फूड और टर्की के कल्चर एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी ट्रिप अगोड़ा से प्लान करें। और एक बात, आई एम तो लविंग इट हियर। अगोड़ा। Throughout this video, we're going to do a desktop computer dissection using 3D animation, kind of like a dissection lab in biology class, but instead, we'll journey through the inside of this computer and disassemble every piece of hardware. We'll then use a microscope and zoom in to give you a nanoscopic view of the transistors and other structures inside. To make this video, we disassembled all the hardware inside a typical desktop computer. We desoldered and removed the components from each of the printed circuit boards and took thousands of pictures. Then, using these pictures, we meticulously 3D modeled every single component from the computer case down to the tiniest resistor. As a result, here's all the hardware that we'll explore throughout this video. It kind of looks like a crime scene where someone viciously destroyed a computer and arranged all the components. But anyways, let's dive right in. We'll begin this journey with the Central Processing Unit, or CPU, which is the brain of the computer. On top, we have the cover, called an integrated heat spreader, and inside is a smaller metal package that holds the integrated circuit, which is technically called a die.
This die is mounted on a printed circuit board that distributes the 1200 connection points to landing pads that interface with the landing grid array on the motherboard. The integrated circuit inside has a few different sections, but perhaps the most recognizable are the 10 cores where programs and instructions are run. Each core is quite complicated, so here's a diagram laying out the different functional sections. There are dozens of rather complicated elements in this diagram, and you can look forward to a series of videos we're currently planning which will explore computer architecture and how each of these sections work. Let's zoom into a nanoscopic view of the integrated circuit so we can see individual transistors. These transistors are incredibly small, only a few nanometers wide, and in this die there are approximately 8 to 10 billion. On top of the transistors are multiple layers of metal wires, with vias rising vertically between the layers. Together, these transistors and wires create a multi-layer labyrinth or highway, resulting in a computer that can execute billions of operations every second. Let's now zoom out and look at other sections of the CPU. To the side of each core is the shared L3 memory cache and ring interconnect. On the far right is an integrated graphics processor which functions as a less powerful GPU. In the top left is the memory controller which sends data to and from the DRAM. And finally, on the far left is the system agent and platform I/O, which communicates with the chipset on the motherboard and manages the flow of data between many of the other components in your PC. So with that in mind, let's move on and look at the motherboard. This motherboard is a massive printed circuit board with thousands of wires running inside and a variety of microchips, components, sockets, ports, slots, headers, and connectors soldered to it. Perhaps the single most important and expensive component, aside from the bare PCB, is the chipset, which is this integrated circuit found underneath a heatsink down here, and is connected directly to the system agent section in the CPU. Here's a diagram illustrating how the CPU and chipset are connected to everything else. As seen here, the CPU connects directly to the DRAM, one or two displays, the GPU, and perhaps a few SSDs plugged into the M2 slots. The chipset manages most everything else: data flowing through the Ethernet or Wi-Fi, data going to and from solid-state drives and hard drives plugged into the SATA ports, some of the PCIe slots, your keyboard and mouse, USB devices, and the audio sent to the speakers or from the microphone. Just a quick note. Computer hardware has evolved immensely over the past 65 years and continues to evolve. So the details we show should be thought of as a current-day example PC and not as how all computers work. Let's move on and skip over the many different sockets and connectors throughout the motherboard and focus on the voltage regulator module, or VRM, found near the CPU. These components are used to drop the voltage coming from the power supply down to the 1.3 volts used by the CPU. As a result of all the power flowing through these components and their 80 to 90% efficiency, heat sinks need to be placed on top. While we're on the topic of power, this CPU consumes power equivalent to approximately 16 LED bulbs, thus generating a considerable amount of heat, which is taken away by the CPU cooler. This particular cooler uses a pump to circulate liquid through these tubes and into the radiator's channels, which transfers heat to the radiator fins. The fans then help transfer the heat to the air, and the cooled liquid returns to the pump via the return loop. The pump is a brushless DC motor constructed from a PCB, a control chip, and a stator on the dry side, a barrier in the middle, and then the permanent magnet rotor and impeller on the liquid side. There's no mechanical connection between the rotor and stator, thereby preventing any leaks of the cooling liquid. Let's move on to the power supply, which distributes power throughout the computer. In here, the main transformer reduces the voltage and bridges the isolation boundary between the primary side high voltage and the secondary side lower voltages used throughout your computer.
Here's the control PCB that ensures a stable output voltage and sends adjustment signals to the switching power transistor on the primary side using opto-isolators. There are dozens of other components used to filter the input voltage and generate various output voltages, which are then sent to all the different hardware in your computer. For example, an SSD consumes just a few watts, and the connector uses these voltages, whereas your GPU can consume hundreds of watts using these connectors and these voltages. Next, we'll explore the GPU, but before that, let's take a step back and consider the technology we've covered thus far. Alone, each of these components doesn't do much at all, but when united, they combine to form a powerful system. Similarly, this video is a multidisciplinary combination of engineering, technology, art, and animation inspired by the Magic School Bus. We can't emphasize enough how important it is to be a multidisciplinary student. And to help you do that, the sponsor of this video is Brilliant.org. Brilliant is a multidisciplinary online education platform which teaches a ton of different topics in hands-on interactive ways. Here are 2 courses from different disciplines that you might think were entirely unrelated. However, when combined, they provide the foundational basis for a cutting-edge field of science and engineering. This combination of seemingly unrelated courses can be done with pretty much any 2 courses that Brilliant offers. Don't worry, you won't be learning from boring textbooks, but rather Brilliant uses interactive modules to make their lessons entertaining and help the concepts stick in your head. It's incredibly easy to sign up. Try out some of the lessons for free, and if you like them, which we're sure you will, you can sign up for an annual subscription. We personally are currently working through their lessons on quantum circuits and algorithms for a future video that dives into quantum computers. Brilliant is offering a free 30-day trial with access to all of their thousands of lessons. And to the viewers of this channel, Brilliant is offering 20% off an annual subscription to the first 200 people who sign up. Just go to brilliant.org/brancheducation. The link is in the description below. Let's get back to dissecting this computer and move on to the graphics card and GPU, which is also the brain of the computer. Well, actually this analogy doesn't really work very well, but anyway. Opening the graphics card, we see another PCB with the GPU's integrated circuit in the center, VRAM chips all around, and the voltage regulator module on the side. ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰਾ ਕਾਨੂੰ ਸੈਡ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਈਲ ਤੇਰੀ ਕਾਨੂੰ ਸੈਡ ਭਰਾਵਾ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾ ਕੁੱਟ ਲਾਈਏ ਵੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੇ आजा कुट लाइए तो 1 लीटर की बोतल पे पाए Amazon पे गिफ्ट कार्ड। Above the IC is a heatsink with a fan to dissipate heat, and on the side of the graphics card are HDMI and display ports, a PCIe interface, and then on the other side is the input power connector. Let's focus on the GPU integrated circuit, which, similar to the CPU, has more than 1,000 solder pads that connect it to the PCB. Opening the packaging, we find the GPU die, which is noticeably different from the CPU. In here are approximately 11.8 billion transistors organized into 6 graphics processing clusters, totaling 28 streaming multiprocessors. Each streaming multiprocessor is composed of 128 cores, resulting in a total of 3,584 cores. Each core has sections for integer and floating point arithmetic.
and sections for queuing in the operands and collecting the results, and is far simpler than a CPU core. Additionally, on the die is an L2 memory cache, shared among all the graphics processing clusters, a set of memory controllers that connect to the VRAM located around the processor, and a PCIe interface for connecting to the CPU. When we zoom in to see a nanoscopic view of the integrated circuit, we find something very similar to what we saw in the CPU, with the transistors on the bottom and a labyrinth of multiple layers of metal wires above. All these structures are manufactured in multi-billion-dollar semiconductor fabrication plants, or fabs, but that's a topic for a whole different video. So let's move on. GPUs and CPUs are similar in many ways. However, GPUs have thousands of cores that are limited to basic arithmetic, whereas CPUs have only a handful of cores that perform far more complicated operations. Additionally, CPUs have branch prediction and deep pipelines that optimize the execution of code. Here's a quick example of what GPUs can do. Take this image comprised of 16 million pixels, each with RGB values for each pixel. A simple way to brighten the image is to add 20 to each of these numbers. A CPU has 10 cores and thus performs arithmetic to 10 numbers at a time, whereas GPUs distribute the data to thousands of cores, thus performing magnitudes more parallel processing. Let's close this graphics card and talk briefly about the 3D model. Note that this is a slightly older model graphics card because we buy most of our hardware as non-functioning parts from eBay, and then, as shown earlier, we tear them down rather destructively in order to accurately model everything. Additionally, sometimes components shown aren't compatible, such as the board that says DR5. That said, getting every